Hello everyone. In this presentation, we are going to learn about page replacement and its type, local and global page replacement. So first of all, what is page replacement? Page replacement is the movement of a particular page between main memory and secondary storage to efficiently manage a limited physical memory available. Suppose this is our physical memory and this is our victim page and this is our secondary storage. So suppose we require a particular page from secondary storage, so that page will that page has to come in the main memory. This is the required page and this is our victim page that will be replaced by a desired page. So the page that will be replaced is called victim page and it will be swapped out, and the required page will be swapped in the physical memory. Now, what is page fault? When a process requires a page that is not currently in the main memory, a page fault occurs. So here it means like if a process requires, suppose a process requires page number 7, and that page is and that page is not present in main memory, so that is called page fault. And because of page fault, page replacement occurs. Suppose we have page 1, page 2, page 3, and we require page 7, and this page 7 is not present in main memory, so it is called page fault. And now the page 7 will be brought from secondary storage, and this page 7 will be replaced by one of the pages in the page, like in the main memory. And the page that will be replaced will be decided on the basis of some page replacement algorithm that we will see later on. And so suppose here the victim page is page 1, so page 1 will swap out and page 7 will swap in place of page 1, and this is called page replacement. And because of page fault, page replacement occurs. The operating system needs to select a page to evict from the main memory to make space for the requested page. This is what I told you, like the operating system needs to select a page. And now suppose the operating system selected page 1 to be evicted from the main memory to make space for the page 7. Now there are some steps to handle page faults, like how page faults should be handled. The first step is page fault detection. Like, of course, first step is page fault. Page fault is detected. Then page fault handler activation. Then page replacement decisions, like which page is to be replaced. Then disk input output and page retrieval. Then update page tables and data structures. This is like after the pages are replaced, like after the page 7 is replaced, then the page table is updated and the data structure is also updated, and after that the execution resumes. These are some commonly used page replacement. This is what I told you, that in the main memory, which page is to become a victim page is based on some algorithms, and like which page is to be selected to become a victim page is based on some algorithms. In first algorithm is first in first out. In this algorithm, the page which the frame table will be the first one to be out. Like suppose we have page 1, page 2 and page 3, and page 1 is the first page that was included in the main memory. So suppose we have to make space for page 5, then which page is to become a victim page? Then the first page, that P1 was the first in page, that's why the P1 will become the victim page as per the first in first out algorithm, and in place of P1 page, P5 page will be swapped in. Then the last in first out, as the name suggests, then last recently used, optimal page replacement and random page replacement. These are the used page replacement algorithms.
Then page replacements are of two types, of course, local page replacement and global page replacement. So in local page replacement, when a process needs a page which is not in the memory, it can bring in the new page and allocate it a frame from its own set of allocated frames only. In the main memory, there are certain frames allocated for certain processes. Suppose the process 1 needs the page number 5 of its process, and yeah, wait a minute. Suppose process 1 is A, and it has page 1 and page 2, and process 2 is B. Then B process has B1 page, B2 page, and B3 page in it. So now the process A wants that needs a page number 3 of its process. So now the pages A1 and A2 will be replaced, like one of it will be replaced in place of A3, not because in local page replacement the new page is replaced from one of the old pages from of its process only, like page 1, like process A is allocated 2 frames and process B is allocated 3 frames. So process the page 3 of process A will be swapped in or replaced by the process A's 2 frames. Suppose key, yeah, this is it. So local page replacement algorithm. So लोकल पेज रिप्लेसमेंट में हम कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं पेज रिप्लेस करने के लिए, तो वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओल्डेस्ट पेज जो भी होगा वो सबसे पहले रिप्लेस होगा. लीस्ट रिसेंटली यूज जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज पेज है वो रिप्लेस होगा. और एक एल्गोरिदम होती है जिसको हम सेकेंड चांस एल्गोरिदम भी बोलते हैं. और सर्कुलर लिस्ट अप्रोच एंड कंसिडर ये सर्कुलर लिस्ट अप्रोच यूज़ करता है एंड कंसिडर बोथ यूसेज फ्रिक्वेंसी एंड रिसेंसी. तो लोकल पेज रिप्लेसमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. एडवांटेज होता है कि द पेजेस इन मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस एंड द पेज फॉल्ट रेशियो इज अफेक्टेड बाय द पेजिंग बिहेवियर ऑफ ओनली दैट प्रोसेस. सपोज कि हमारी मेमोरी में जो भी पेजेस हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेशियो सिर्फ हमारे उस पर्टिकुलर प्रोसेस से ही अफेक्ट होगा. लाइक अगर हमारा प्रोसेस ए है तो हम प्रोसेस ए का अगर पेज फॉल्ट रेशियो देखना चाहें तो वो सिर्फ हमारे प्रोसेस ए से ही अफेक्ट होगा, ना ही किसी और प्रोसेस से हमारा पेज फॉल्ट रेशियो कोई अफेक्ट नहीं होगा. और डिसएडवांटेज होता है लो प्रायोरिटी प्रोसेस में हिंडर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बाय नॉट मेकिंग इट्स फ्रेम अवेलेबल टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस. सपोज कि हमारे जो प्रोसेस बी है वो हाई प्रायोरिटी की है और जो प्रोसेस ए है वो लो प्रायोरिटी के हैं, और हम चाहते हैं कि प्रोसेस बी का एक पेज हमें स्वैप इन करना है, बट हमारे पास फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है बी के लिए. तो इसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोसेस ए है वो अपनी फ्रेम्स अवेलेबल कर दे बी के लिए. तो इसकी वजह से जो होता है जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस होती है उसके एग्जीक्यूशन में हिंड्रेंस होती है लो प्रायोरिटी प्रोसेस की वजह से. Now global page replacement. When a process needs a page which is not in the memory, it can bring in the new page and allocate it a frame from the set of all frames, even if that frame is currently allocated to some other process. That is, one process can take a frame from another. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस A है और एक प्रोसेस B है, हमने प्रोसेस A को 2 फ्रेम्स अवेलेबल करी हैं और B को 3 फ्रेम्स एलोकेट करी हैं, और हम चाहते हैं कि हमें एक प्रोसेस प्रोसेस बी का एक पेज एलोकेट करना है, स्वैप इन करना है.
तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी की प्रोसेस को जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं वही एलोकेट कर सकते हैं, हम प्रोसेस ए की फ्रेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं बी B4 जो भी पेज है उसको स्वैप इन करने के लिए। तो ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, replaces the least frequently used page all across pages across all processes. Then LRU, an extension जो LRU least recently used algorithm है, इसका extension है that considers the most recent K references, ability to adopt to both temporal and spatial locality, but note the additional complexity. Then Bilady's optimal algorithm provides an upper bound for page replacement performance. These are the some global page replacement algorithms. Now the advantages and disadvantages of global page replacement. Advantage है कि does not hinder the performance of a process and hence results in greater system throughput. कि कोई भी प्रोसेस के परफॉर्मेंस पे हिंड्रेंस नहीं करता है ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट में, क्योंकि अगर सपोज कि अगर हमारे जो B3 प्रोसेस जो हाई बी जो प्रोसेस है वो हाई प्रायोरिटी के और ए जो है कम है, तो हमें बी प्रोसेस से कोई B4 पेज लाना है मेन मेमोरी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि जो B4 पेज है वो सिर्फ बी एलोकेटेड फ्रेम्स में ही स्वैप इन कर सकता है, वो ए के अंदर भी कर सकता है as according to their priority. Then the disadvantages are the page fault ratio of a process cannot be solely controlled by the process itself. सपोज हमें एक प्रोसेस है ए और हमें इसका पेज फॉल्ट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसका पेज फॉल्ट रेशियो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेस ए के ऊपर ही बेस डिपेंड करेगा, प्रोसेस ए का फॉल्ट रेशियो बी प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा. द पेजेस इन मेमोरी फॉर अ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द पेजिंग बिहेवियर ऑफ अदर प्रोसेसेस एज वेल. तो जो पेजेस होते हैं मेमोरी के अंदर किसी भी प्रोसेस के, तो उनका पेजिंग बिहेवियर सिर्फ उस प्रोसेस पे नहीं दूसरी प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है. So these are the advantages and disadvantages of global page replacement. Now the conclusion. Page replacement algorithm determines which pages should be selected for eviction based on specific. This is what I have told, like the victim page. To select which page to become a victim page, there are certain page replacement algorithms which decide which page will become a victim page on the basis of some criteria or aiming to minimize page faults. The page replacement algorithms are used to minimize page faults and optimize system performance. The choice of algorithm depends on the specific characteristics of a system, workload, patterns and memory management goals. तो हम जो कोई भी page replacement algorithm select करते हैं वो डिपेंड करती है हमारे सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक पे, वर्कलोड पैटर्न, मेमोरी मैनेजमेंट गोल्स पे. All and local page replacement offer the advantage of being able to prioritize pages based on the specific behavior of each process. And implementing global page replacement algorithms can be more complex and resource intensive compared to local page replacements. So this was the conclusion of the whole PPT, and thank you for watching.